पुरुषोत्तम सरल संस्कृत भाषया इदानीम् एतानि पद्यानि विरचितानि सन्ति यथा अस्माकं मातृभाषा इव एतानि पद्यानि भवन्ति। अतः वयं श्रीक्षेत्रस्य अस्ति यद् सौन्दर्यं श्रीक्षेत्रस्य कृते अद्य यद् स्मरणीयं दिनम् ऐतिहासिकं दिनम् अस्य दिनस्य कृते वयं प्रतीक्षां कुर्मः। अतः कविः हरेकृष्ण शतपथी निवेदयति कदा अयं समयः आगमिष्यति, कदा मम जीवनं धन्यं भविष्यति, कदा साढे मासे विजय विभवे भक्त जनता समावेशे रासे निहित मनसंघो ससरसं रथे तं राजन्तं भवन भयहरं कांत बपुषं जगन्नाथं पश्यन् जननमिह मन्ये ए मधुमयम्। अद्य रथे जगन्नाथं विलोक्य कथं मम जीवनं मधुमयं भवेदिति कविः प्रार्थयते। अद्य कविः कथं तत्र श्रीमन्दिरं विहाय गुण्डिचा मन्दिरं गच्छति इति नरेशचन्द्रदासः लिखति। विहाय श्रीनीलाद्रिवसति सुखं हृष्टहृदयः सुभद्रारामाभ्यां सह गमन सौख्यं हृदि वहन् स्वभक्तानां चित्तं सुरुचिरकटाक्षैस्तरलयन् रथस्थ श्रीनाथो वितरतु मुदं चक्रनयनः। अतः कवि पुनः तत्र इन्द्रद्युम्न मुखेन कविः शतपथी महोदयः वर्णयति नीलाम्बुदश्यामलकान्तिकान्तं नीलाम्बुधिर्नीलगिरौ वसन्तं लीलामयं नीलसरोजनेत्रं देवं जगन्नाथमहं भजामि। वस्तुतः किमर्थं श्रीजगन्नाथः गुण्डिचा मन्दिरं प्रति गच्छति चेत् प्रभोः जन्मवेदिका श्रीगुण्डिचा मन्दिरनाम्ना विराजते। एवं तत्र राजा तत्र दिव्यदारु विग्रहान् आनीय रथेन समानीय श्रीमन्दिरे स्थापितवान् आसीत् इन्द्रद्युम्नः। अतः रथगमनमार्गस्य बडदाण्डस्य चारुतरमपि वर्णयति कविः तत्र शतपथी महोदयः। श्रीशङ्कराचार्य प्रणीत जगन्नाथाष्टकवत् सर्गान्ते एतानि पद्यानि विलसन्ति वयं पश्यामः भारतायन महाकाव्यं। तत्र एकं प्रसिद्धं पद्यं कदा शङ्खक्षेत्रे कलिकलितगङ्गा विलसिते कदा बङ्गाम्भोदे स्वरसुलतिते तीरपुलिने सुभद्रा मध्यस्थं स्वजनबलभद्रेण सहितं जगन्नाथं दृष्ट्वा जननमिह मन्ये मधुमयम्। अद्य बडदाण्डे रथोपरि जगन्नाथं दृष्ट्वा मम जीवनं सार्थकं भवति इति प्रायः सर्वेपि कवयः इत्थं वर्णयन्ति। कारणं किं न कारणं भवति। कविः लिखति रथयात्रायां यदा रथारूढः भवति महाप्रभुः जगन्नाथः तदानीं कथयति कविः करुणाकरदास रथा नहीं लूँगा और तटस्थ खड़ा रहूँगा। उनकी ये न्यायप्रियता, उनका ये न्याय का भाव, वो सभी को समभाव से देखना, सभी अपने छोटों को, सभी को अपने भाई बहनों के रूप में देखना, यही तो प्रतीक है हमारे कृषि देवता बलभद्र जी का। उड़ीसा एक कृषि प्रधान देश है, हमारा राज्य है, और भारत भी कृषि प्रधान देश है। और यहाँ पे बलभद्र जी जो अपने कंधे में मुसल लिए हुए, हल लिए हुए, वो एक दिखाते हैं कि आदमी को कितना क्रमशील होना चाहिए, कितना क्रियाशील होना चाहिए। शोभित लांगरम समुसलम कादम्बरी चंचलम रत्ने चर्चिल कुंडलम गंडयुगम नागेंद्र चूड़ोज्वलम संग्रामे चंचलम शशांक धवलम श्री कामपालम भजे। इनको हम नमन करते हैं जो चंद्रमा के समान धवल हैं, सफ़ेद हैं। जहाँ पे जगन्नाथ प्रभु को हम कालिया कालिया कहते हैं, कालिया ठाकुर कहते हैं, वो
अगर हम इन तीनों ठाकुरों को देखेंगे, माँ सुभद्रा को देखेंगे, जगन्नाथ जी को देखेंगे, बलभद्र जी को देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि विश्व में जितनी जातियाँ प्रजातियाँ हैं, जितनी नस्लें हैं जो रंग भेदभाव करती हैं, कोई कहते हैं हम गोरे हैं, कोई कहते हैं हम काले हैं, कोई कहते हैं कि अरे ये तो कोई दूसरे ही रंग के हैं, तो इस तरह से पूरे महाद्वीप में लोग बटे हुए हैं, रंग की भेदभाषा को लेकर आपस में लड़ते हैं। यहाँ पर आके देखें, चाहे वो श्वेत वर्ण हमारे बलभद्र जी हो, चाहे श्याम वर्ण जगन्नाथ जी हो, चाहे स्वर्णमुखी माँ सुभद्रा हो, सब एक साथ मिलकर कैसे रत्न वेदी पे विराजमान है। ये धीरे धीरे देखिए आगे बढ़ते हुए बहुत ही कठिन कार्य है। हमें लग रहा है कि ये बहुत सहज है, लेकिन नहीं, पर भक्त भी, इनके जो सेवक गण हैं वो भी पूरे हट में हैं कि प्रभु बलभद्र बड़े भाई आप जितना मर्जी आगे पीछे होइए, धीरे धीरे बढ़िए, पर हम तो आपको लेके सिंहासन पे रथारूढ़ करेंगे ही। यहाँ के जो इनके सेवक गण हैं, इनकी भी विभिन्न शाखाएं हैं, अलग अलग नियोग के सेवक गण हैं जो पीठ का इनको जोड़ देते हैं। हम देख रहे हैं, अपने आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये एक विशेष भूषा जो वेशभूषा धारण करते हैं, शरीर पे कोई विदेशी प्रकार का कपड़ा धारण नहीं करते, सूत के बने हुए कपड़े और रेशम पतले पाट के बने हुए मधुर लीलारे सुंदर भावरे ये समग्र जनता समवेत होइछन्ति। सेपटे जलसिंचन करा जाउछि ग्रीष्म प्रवाह को रोकिबा पाई, किंतु रथत्रय देखा जाउछन्ति सत जेपरी ये तीनोटी मंदिर जेपरी लीला लोहित होउछन्ति। बलभद्रंक रथर आवरण, कृष्ण लोहित सुभद्रांक रथर आवरण कला और लाल कपड़ा, पीत लोहित होउछन्ति नंदीघोषर आवरण हलदिया एवं लाल कपड़ा। यही पीत लोहित रथ दृश्यमान हेलानी, जो रथरे रहिछन्ति शंख बलाहक श्वेत एवं हरिदस्व, ये चारि अश्व जोजा हेबे, अश्व योजन हब, अश्व योजन हेले ये रथ गुड़िक सते कण आकाश को उड़ी जिबे कि सेहीपरि भावरे अश्व गुड़िक ऊपर मुहाई रही था। ये परम पावन क्षेत्रर ये जो परम पावन यात्रा, ये यात्रा समग्र जगत पई पुण्यप्रद आनंदप्रद, कारण गुंडीचा महायात्रा करबा पई निर्देश देइथिले स्वयं भगवान निजे जगन्नाथ महाप्रभु इंद्रद्युम्न को निर्देश देइथिले एवं सही अनुसार इंद्रद्युम्न प्रतिवर्ष तांकर जन्मदिन आरंभ करी गुंडीचा यात्रा स्नान यात्रा आरंभ होला एवं सरीब कौ दिन नीलाद्रि विजय दिन शेष है। यही नंदीघोष रथ, तालध्वज रथ एवं देवदल रथ, ये तीन रथर अनेक सुंदर वर्णना रही से अश्व मानकर। विशद दीर्घ नयन सरु लोम सरु कर्ण पवन दिशे गमन मनरुजव गलाहक सुपुष्प सुमेघ सुपुष्प इव केउपमा तांकु देव केशम हेव। चलिला चलिला वर्तमान तालध्वज रथ चलीगला, आरंभ होला तार चलन, चक गड़िबा आरंभ होगला। सारथी तांक पासरे वीर बेश होई बसी खाई निर्भरे। तालध्वज रथर अपूर्व वर्णना अच्छी, जो तालध्वज रथरे 14टी चक लगी, चतुर्दश चक्रयुक्त एवं यही अश्वमान तीव्र घोर दीर्घश्रम एवं स्वर्णनाभ जो दौड़ी रे टणा जाउछि रथ, से दौड़ीर नाम होछि बासुकी। बासुकी नाग सी होछि दौड़ी, सारथी होछि मातली, आउ ये रथर परिचालक होउछन्ति स्वयं वासुदेव। आवरण नीललोहित, लंब प्रस्थ 33 फुट प्राय एवं काष्ठ संख्या होछि 763 खंड। एहीपरि तालध्वज रथर द्वारपाल होउछन्ति नंदा एवं सुनंदा, रहिछन्ति विभिन्न दिगरे पार्श्व देवता पार्श्व देवी मान रहिछन्ति। इंद्र गोविंदराज ऐरावतरे बसिथिबा विचित्र दृश्य देखा जाए। इंद्र देखा जाती, भृगु सुप्रभ वज्र शृंगी ध्रुव उल्लुक आदि ऋषिमान रहिछन्ति। उत्तर पार्श्व नंदा त्रिलोत्तमा रहिछन्ति।
पश्चिम भाग में चंडा चंडरूपा द्वारपाल रूप रही एवं रही गणेश कार्तिकेय सर्वमंगला प्रलंबारी नाट्यंबर मुक्तेश्वर शेषदेव गजान्तक एवं हरिहर यहीपरि भाव में ये रथरे जो देवता माने अछंती जो शक्ति अछंती ये समस्त शक्ति को नहीं जी अनंत जहाँ को अनंत नागर अवतार कह जाए तांकर रथर उपरे ये जो रही शुआ दुईटी सी होती श्रद्धा एवं विश्वास भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ जाभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वन्तस्तमीश्वर वर्तमान याउक कहते अपसर अपसर दूरे जाओ वर्तमान रथ आग को चलिला ये तालध्वज रथ ये घर घर नादरे आगे जबार दृश्य आपण मानक आनंदित करुवा निश्चित बलभद्र कहीं आगे जाती कारण से होते प्रशासक सी आगे जीवे माने आगे रास्ता सफा करी जीवे तांकर जो प्रचंड कोप जो हल लांगल धारी बा लांगल मुसलधारी से हलध्वज बलराम से आगे चलिले बाट सफाई जीव एवं तांका पछे पछे भौणी सुभद्रा चली जाती बड़ भाई पछरे जीवा एवं सभा पछरे जगन्नाथ महाप्रभु जाती दृश्य मन पड़ुछि जेतेबेले भगवान श्रीराम अवतार रे वनवास रे जाउतिले प्रभु सेतेबेले दृश्यमान होउतला ए दृश्य बड़ भाई रामचंद्र आगे जाउतिले मझिरे जाउतिले जगज्जननी जानकी पछरे जाउतिले लक्ष्मण गोस्वामी तुलसीदास लिखिछन्ति आगे राम लक्ष्मण वन पाछे तापस बेश विराजत काछे उभय बीच सिय सोहति कैसी ब्रह्म जीव बीच माया जैसी प्रलंबारी सुंदर भाव रे निज रथरे विराजमान करी समग्र ब्रह्मांड को प्रकंपित करी से शुक्ल शुभ्र ज्योत्स्नारे जगत को उद्दीपित प्रदीपित करी आनंद करी कहा जाए जय राम सदा राम जी सदा आराम आनंद सृष्टि करती देखंतु कि सुंदर भाव रे जनता जनार्दन मंजुल भाव रे समष्टिगत होइकरी भिड़ जमेइछंती ए जनार्दन का यात्रा रे जनता जनार्दन रहिछंती जनता जनार्दन सेपटे गजपति महाराजा जी नरेंद्र नरंक भितरे इंद्र नरंक भितरे श्रेष्ठ नरोत्तम जहाँ को आम कहू नारायणांच नरोत्तम से भगवान नर नारायण अवतार होते तेणु नरंक भितरे नारायण विद्यमान ये जो असंख्य जनता परस्पर जो भिड़ जमे भाव संपदरे उज्जीवित करिसंती समग्र ये विश्व को आज टीवी परदारे जो माने देखुचंती तांको मनरे उन्मादना आसुची से माने उद्ग्रीव होउचंती देखिबा पाई ये अपरूप दृश्य को वर्ष के थरे यही दृश्य यही बड़ दांडरू नंदी घोष तालध्वज एवं देवदनंकर दृश्य आम अवलोकन करूँ अति सुंदर अति मधुर ए दृश्य तालध्वज रथरे रही हुहु नामक गंधर्व यार चरदेवता होती ब्रह्मा एवं शिव रही गर्भाधीश्वरी तुंगा तुंगभद्रा प्रभा सुप्रभा धात्री विधात्री नंदा सुनंदा एवं वर्तमान आमे देखुछु देवदन रथ आपण मानक पई अल्प समय विज्ञापन विरति परे पुणी आमे आरंभ करिवु एई धारा विवरण। हाँ रास्तार जाउथिबा समय रे हुए तो कौनसी बुला पशु दुर्घटनाग्रस्त किंबा रोगाक्रांत हेबा आपणक नजर रे पड़िथिबो हेले आपण किछि करि पारुनथि। एबे बुला और असहाय पशुपक्षी को जरूरीकालीन चिकित्सा सुविधा जोगाई देबा पई राज्य सरकार द्वारा आरंभ होईछि एनिमल हेल्पलाइन। एथिपाई जारी होईछि टोल फ्री नंबर 1962 प्राणी आम्बुलांस और मोबाइल भेटनरी यूनिट जरिया सारा राज्य रे एनिमल हेल्पलाइन कार्य करुछि। 1962 को कॉल कले एनिमल हेल्पलाइन टीम बुला पशुपक्षी को जरूरीकालीन चिकित्सा सेवा जोगाई देउछन। आपण भी एमिति परिस्थिति रे एनिमल हेल्पलाइन को कॉल करंतु। मने रखंतु टोल फ्री नंबर 1962। मोतियाबिंदुर संपूर्ण चिकित्सा पई आज ही जोगाजोग करंतु। भूमिका आई हॉस्पिटल गोटे पाद आलोक आड़
शिशु मृत्यु हार सर्वाधिक पॉइंट ह्रास करिबारे ओडिशा देशरे युक्त खाद्य नियमित स्वास्थ्य परीक्षा डाक्तरखाना रे प्रसव गुरुत्वपूर्ण। शिशु को जन्म परे परे कस क्षीर खुआइबा 6 मास पर्यंत केवल माँ क्षीर और 6 मास परे परिपूरक खाद्य आरंभ तिले माँ जगत जननी अभी पधार रही है। रथारूढ़ होने की कहा गया महाप्रभु की ये जो सुंदर वरदान को आप देख रहे हैं, धीरे धीरे भक्तों की तादाद बढ़ती हुई और धीरे धीरे ये सुंदर नीलाचल धाम का भव्य दृश्य देख रहे हैं। चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है और इसी भीड़ में आपको नजर आते होंगे कि श्रीवत्स खंडसाल, इसी श्रीवत्स खंडसाल देखते हुए जहाँ महाप्रभु जगत के नाथ जगन्नाथ विराजमान होते अपने भाई बहनों को लेकर के और भाई बहनों को लेकर के हमेशा यहाँ रहते हैं। ये भीड़ कितना सुंदर भीड़, कहा गया धूप की किंचित भी नहीं परवाह, देखो भक्तों में है अनंत उत्साह, दर्शन की ही लेकर मात्र चाह, सब देख रहे हैं यहाँ प्रभु की राह। और चारों तरफ कहा गया प्रभु जगन्नाथ स्वामी तवरथ समीपे सहृदयम जनारण्यं कीमा रुचिर कुसुमम भूमि पतितम। दूसरी तरफ भगवान बलभद्र जी रथारूढ़ हो रहे हैं और बलभद्र जी कौन है ना, साक्षात शूलपाणी। कहा गया प्रभु आप जगत के संसार के सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मों में से एक है, जो पुण्येन्दु धवलम बलम कहा गया। और दूसरी तरफ क्या गया कहा गया कि आप स्वयं साक्षात ब्रह्म हो। और क्या कहा गया कि आप संकर्षण हो। सूरदास लिखते हैं वे हैं रोहित सुत रोहिणी सुत राम, गौर अंग सुरंग लोचन प्रलय जिनके ताम, एक कुंडल श्रवणधारी ज्योत दरसी ग्राम, नील अंबर अंगधारी श्याम पूर्ण काम, ताल बन इन बच्च मार्यो ब्रह्म पूर्ण काम, सूर प्रभु आकर्षिताते संकर्षण है नाम। आपका नाम संकर्षण है प्रभु, इसीलिए आप आ रहे हैं। और टाहिया अभी नहीं है क्योंकि ये टाहिया अभी समाप्त हो गया है। और महाप्रभु कहते हैं मदमत्त हस्ती सम झूम झूम देखो श्री रेवती रमण, मेदिनी प्रकंपित कर आते हैं कृपा बारी वितरण, मंगल ध्वनि हुलहुली से स्वागत करते हैं भक्तगण, भक्ति मुक्ति प्रदाता का कर साक्षात संदर्शन, भक्ति मुक्ति प्रदान करने वाले का स्वागत करते हैं भक्तगण हुलहुली ध्वनि से और करताली से। स्वागत आरत हरण मुरारी, हम सब तुम पर तन मन वारी, मन मह कृपा भाव दर्शाए, दीन जनन कह देखन आए। आप दीन जनों को पतित जनों को देखने आए और भक्त कैसे उनको झुमा झुमा करके ले रहे हैं। हरि बोल कही सकल झुलावही, तब प्रभु आगे पैग बढ़ावही, सुमन किरीट हलाई हलाई, मंथर गति प्रभु वरन न गाई। भगवान मंथर गति से अग्रसर हो रहे, माँ सुभद्री के अभी अग्रसर होती हुई। ये अनंत ब्रह्मांड के अनंत है, इसलिए कहा गया प्रभु केवल मुझे अनंत शक्ति दे दो, अनंत भक्ति दे दो। हे अनंत तेजस्वी स्वामी मुझमें भी वह तेज भरो, हे अनंत भंडार वीर्य के मुझ पर भी कुछ कृपा करो। हे अनंत बलशाली भगवान मुझमें भी वह बल भर दो। हे अनंत ओजस प्रियतम मुझमें भी वह ओज भर दो। प्रभु आप जगत के नाथ जगन्नाथ के अग्रज हो, इसलिए समग्र संसार की लोग आपको देखने के लिए तरस रहे हैं। दूसरी तरफ माँ सुभद्र के रथारूढ़ होती हुई और तालध्वज रथ में भगवान अभी संसार को अहो हो जय जगन्नाथ जय बलभद्र जी के नारों से प्रकम्पित होता हुआ प्रभु आप बलक पावड़े समन मिचाए, नव बल दाऊ बाहर आए, धरे हाथ से वायत कंधे, बाट रजो कट फेंटा बांधे। आज महाप्रभु श्री जगन्नाथ के अग्रज को यहाँ पे आप रथारूढ़ होते हुए देख रहे हैं। और माँ भगवती भारती जो सकल संसार की जगत माता के रूप में जानी जाती है, कहा गया हे जगत जननी आप सकल संसार को आनंद प्रदान करने वाली हो। आप ऋग्वेद रूपी बल द्रुप सामवेद श्री आप स्वयं यजुर्वेद हो, शरणागत दीनत्व परित्राण परायणे। हे माता आप शरणागत के
ये दीन को आप दुख हरण करती हो। शरणागत दीन दुखी जन की नित रक्षा करती तुम ललाम, दुख दन्य सकल सब हरती नारायणी तुझको प्रणाम। हे नारायणी तुझको प्रणाम, क्योंकि तुम सर्वरूप हो, तुम सर्वरूप सर्वेश्वरी हो, तुम सर्वशक्ति की पुण्य धाम, भय से रक्षा करने वाली हे देवी देवी तुझको प्रणाम। इसीलिए कहा गया आप क्षमामयी हो, क्षमामयी तू दयामयी है, क्षेममयी है, सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है, विभवशालिनी विश्वपालिनी दुःखहर्त्री है, भय निवारिणी संतारिणी सुख करती है। हे देवी तू करती सबका प्राण है, हम संतान तू जननी तू प्राण है। माँ जगत जननी रथारूढ़ होती हुई और महाप्रभु बलभद्र जी रथारूढ़ हो चुके हैं। जय जय, इसीलिए जय जयकार से प्रकम्पित होता हुआ है वरदान। जय जय जगत जननी महारानी, ओम प्रसन्न विश्व कल्याणी, सर्वशक्ति रूपा तुम माता, कारक कारण कारज ख्याता। हे कारण कारज, आप जगत जन को आनंद प्रदान करने वाली हो। करऊं प्रणाम जोड़ी जुग पानी, ओ दयाल दीन जन जानी। मुझे दीन जानते हुए आप हम पर कृपा करिए माँ, क्योंकि आप सुख कैवल्य प्रदान करने वाली, सुख कैवल्य प्रदान करने वाले अम्बे। करऊं प्रणाम जननी जगत अम्बे, आप जगत जन को आनंद प्रदान करने वाली, सुख प्रदान करने वाली तुम हरि माया मंगल करणी, सकल चराचर जनमन हरणी। इसीलिए हे माता आप जगत जननी हो, आप स्वयं साक्षात भवानी हो। इसीलिए तो कहा गया भवानी भवहर्त्री च, भवानी भक्तवत्सला, भवानी भुवनाधारा, भवानी भुवनेश्वरी, भवानी भावदत्ती च, भवानी भाव विह्वला, भवानी भैरवाकारा, भवानी भैरवप्रिया। आप साक्षात भवानी हो। हे माते आप जगत को आनंद प्रदान करने वाली, क्योंकि आप जगत जननी हो। जगत के कहा गया इन्हें जगन्नाथ स्वयं विष्णु बलभद्र त्रिलोचन, भद्रा देवी परा साक्षात माधवा गण दैवतः। ये भद्रा निश्चित रूप से परा दैवत साक्षात माधवा गण दैवत। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जगन्नाथः जयता जगन्नाथः, जयता जगन्नाथः। सर्वं रहस्यं पुरुषोत्तमस्य देवो न जानाति कुतो मनुष्यः। अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य कर्ता श्री जगन्नाथः कलियुगे जात। भद्रं पूजय राम सदा राम, सच्चिदानंद विग्रह, अविद्या पंकरहित निर्मलाकृत हे नमः। अविद्या नहीं, अज्ञान नहीं, समस्त पंक विरहित हे नीललोहित आवरणधारी, हे चतुर्दश चक्र विशिष्ट रथरे आरोहणकारी, चतुर्दश ब्रह्मांड को प्रकंपित करती ये बलभद्र। कहीं ना जय अखिल जगत भार धारण श्रम वर्जित अनंत नाग रूपरे यही बलभद्र अखिल ब्रह्मांडर निखिल पृथ्वीर भार को धूर को धारण करती एवं सामान्य श्रम से अनुभव करती नहीं, एवं तापत्रय विकर्षाय हलंकलय से सदा ये त्रिताप को विकर्षण करवा पाई, आकर्षण करवा पाई आमर जो अच्छी आधि भौतिक आधि दैविक एवं आध्यात्मिक यही तीन ताप को आकर्षण करती हल लंगल मुसल द्वारा। तेणु सी हल से धरी जो प्रभु को देखिले आम भितर अविद्या रहिब नाही, जो प्रभु को देखिले आमर मन प्राण शरीर निर्मल हो, आमर विद्या बुद्धि निर्मल हो। से सच्चिदानंद विग्रह बलभद्र प्रलम्बघ्न प्रलम्बारी सी तापत्र विकर्षण करुचंती प्रपन्न दीन त्राणाय स्फुट नेत्र सरोरुह। जी प्रपन्न हब, जी आश्रित हब, जी दीन वचन कहब ताकू निश्चित भाव उद्धार करिवे। त्वमे बेश पराशेष कलुष ख्यालन प्रभु, अशेष कलुष ख्यालन करिवे प्रख्यालन करिवे से प्रभु। प्रपन्न करुणा सिंधो दीनबंधो नमस्तुते। जगन्नाथ को दीनबंधु कहा जाए एवं सेहीपरि बलभद्र को मध्य दीनबंधु कहा जाए। जेतिकी उच्च होउचंती नंदीघोष रथ ताठारु हाते कम होउचंती बलभद्रंकर तालध्वज रथ एवं तांकठारु हाते कम होउचंती सुभद्रांकर देवदलन दर्पदलन बा पद्मध्वज रथ। गरुड़ध्वज तालध्वज पद्मध्वज यही तीन रथ आज त्रिविध महिमा सृष्टि करुछि। यही जगन्नाथ महाप्रभुंकर से शुक्ल अश्व चतुष्टय चारि धड़ा घोड़ा जोचा जाउछंती जे
ये चारि धड़ा घोड़ा एमानंकर शंख श्वेत हरिदस्व इत्यादि एमाने कहीं ना शंख संग होचे मंगल ख होचे आकाश जे आकाश को मंगल करिवे गगन पवन को सुंदर करिवे जे श्वेत शुभ्र स्वच्छ वर्ण धारण करिछंती से कौन करिवे ना जगत रे निर्मलत्व विस्तार करिवे महाप्रभुंक रथ किपरि ना तथि उपरे चारि पाशरे चामर चामर खदिनी कर दिशई शोभा पार मंदप बने ऊपर घोड़र हित झड़ी झालर सहित कहिब तहि शोभित केही वचने चारिपाशरे चामर अछंती खदिनिकर अछंती एवं अपार शोभा मंद पवन रे आंदोलित से रथ मानकर घोड़ाणी बा तांकर होचंती जो एठी सामना रे जो चांदुआ मध्य झुलुचंती ये मंद पवन रे आंदोलित होचंती ऊपरर बलभद्र as per the divine protocol. It is the Taladhwaja that begins first, then followed by Devadalana, the youngest of siblings belonging to Goddess Subhadra. And after that, it can be construed as the divine protocol or even the comfortability and the safety that is to be followed in the Grand Avenue. Lord Jagannath follows the youngest of siblings. This is how they are pitted against each other right now. Up ahead is the Taladhwaja, right inside the sea of devotees like an island, and this is how it moves slowly and steadily. Each chariot is manned under a caretaker, and caretaker always comes from the non-Brahminical servitor. The Itapoti is called as the Badagra. He is understood to be the senior most Daitapati. So three senior most Daitapatis are chosen to take care of three individual chariots. And there is another person who is called Dahuka. One can see he will be waving a long piece of chain, and he is actually the cheerleader. He signals it to the crowd all the time, to the devotees, those who are to be controlled from time to time because they show their eagerness in such a way that a chariot may take an untoward situation turn and it may cause an accident. In earlier days, centuries back, that used to happen. There used to be the accidents also. And sometimes many spirited devotees, they were hurling themselves before the huge wheels of the chariots so that there would be instant salvation. That was the belief of many people. And looking at that, the Western tourists, they were frightened and they were so aghast that they started calling it to be the movement of the Jagannath. In the 14th century, when Mandeville came, and he was the first European to see the festival of chariots at Puri, and he was so saddened, you can say, or he was so enthralled, and he was so mesmerized, and he was perturbed by these sceneries there, and he wrote in long details about the chariot festival of Puri. These are all codified in the book, The Travels of Mandeville. The viewers or the listeners, those who are interested, they can look for that. And there a new word came up, the word for Jagannath. And obviously, Mandeville took the word Jagannath from the word Jagannath. But his Western mind failed to understand the meaning of Jagannath, the Lord of the universe. And he thought that the entire structure, the entire wooden structure is called Jagannath. Because in those days, the place
had its name called Jagannath. Because the holy town of Puri that we call it to be Puri now, it had many names. Many are codified still. It was Jagannath Puri. The previous name was Jagannath Puri in the 19th century, and before that it was known as Purastone. Then many people say it was originally known as Dantapuram, but that is still debated and disputed, because the Buddhist people think that the tooth relic found a place in the body of Lord Jagannath, but that cannot be believed very much. And as we enter, this is the main temple of Lord Jagannath. This is the place that I was talking to, the main canopy of Lion's Gate, and it has been florally decorated for the last many years. We have been seeing that floral patterns and decorations are happening in every year, and artists and decorators, they come from outside to give a new look, to give a new decoration, particularly the marigolds of different colors. They fun to add a new sparkle and add a new zeal to the entire festivity. This is how, on the Grand Avenue, moves slowly and steadily the chariot of Taladhar. And there are the gong beaters, and there is a navigator. You can see the navigator is holding a red flag to signal if it is turning to the left or to the right, it has to go straight, because it has to be steered into the middle of the Grand Avenue, because when it was parked on the right side, and in the middle was the Devadalana, and on the left side that was the chariot of Lord Jagannath, that is Nandivas. It's less hot now, the humidity has fallen down obviously, but still then some amount of humidity is there, and not to dampen the spirit, there is the continuous sprinkling of cool water by the fire tenders, because that is the way things happen. And earlier the volunteers from Bharat Sevashram, they used to come, and with handheld cylinders they were sprinkling water, and one can understand that experience of getting sprinkled with cool water. It had a magical effect, as if the rain struck. And obviously, at this time of the year, actually the car festival happens in the month of June or July in the Gregorian year, and in the month of Indian month of Justice, falling within the period of June to July, and June or early part of June. So anyway, in this part of the year, there is greater amount of humidity. The rains are about to set in, and people wait for that. And once the Lord will get into the visual throne, there will be no festivity. And Odisha, as being the agrarian state, people will be busy in their agricultural work, and there will be no festival, no major festival, only the smaller festivals like Jhulan Purnima, that will be held, and that is held for about a month there. And earlier, Imar Matha, which is no longer there, that stood just in front of the Lion's Gate, they used to have the Mathadhisa or the Matha people or the monastery people, they used to have the biggest celebration of the Jhulan Purnima. There used to be the huge swing. Of course, there is another huge swing just in front of the Mukti Mandapa, or the seat of the wise Brahmins, onto the right entrance of the main temple. There also the swing is there, and the representative gods and the replica gods of Lord Jagannath, they are carried, Madan Mohan is carried to the swing. So that is another celebration, and you may not believe, and those who have seen it, they can easily believe that how hundreds and thousands of people in the middle of the night, they wait for that holy swinging of the Lord's Day. And the gong beaters are there. The gong beaters, they add in unison to the magical effect and the mystical effect, mesmerizing effect among the devotees. And there is a bustle, and there is
the pushing and pulling of the devotees just to touch the rope if not allowed to pull the rope. Of course, it is the prerogative of the security people to see that not many devotees, eager devotees are allowed inside the garden to pull the chariots because they are not trained. And these security people, they are well trained for the last many days how to pull the chariot and how to steer it out of any untoward situation and event in case there is any. So there is a rustle and bustle among the devotees. They come from all the sides just to touch the rope. This is the band of Sankirtans, the Kirtan Premis, or the lovers of Kirtan, or the participants of Kirtan. They come from various schools and various schools of communities because they are acting upon unison, producing a mesmerizing musical effect on the Grand Avenue, and that adds to the spirit. And one is not within its control or within his control, because that is the spirit of the festival here. The devotees, they are eager to touch. Those who are not getting any chance to pull the chariot, they just touch it. And I have seen it personally many times. And looking at that, I'm reminded about what Michelangelo had painted in the Sistine Chapel at Rome about the creation of man. There is the God, Lord himself, just raising his right hand, and the finger is stretched out, and the man, Adam, representing the mankind, is trying to touch the finger. Why the touch? The touch means the energy. Touching the finger of God, Adam felt energized. That is the way. The same thing happens on the Grand Avenue here. People want to be energized. People want to get into the strength, divine salvation, and divine understanding. And when they go back from participation, they will be new people. And salvation, that is the ultimate aim of the people. And that is the ultimate aim of all schools of belief, all schools of thought. As we can see on the monitor, when the chariot of Lord Balabhadra moves, there is one red color flag, a large flag that is waved at the crowds. That is a signal. So that is the way people have to, the security people and also the eager devotees, they have to keep a watch on the movement of the red flag. He is the navigator. Without navigation, nothing can be steered properly. That exactly happens, particularly when it was a macadamized road, not the black metal road that we find today on the Grand Avenue. There used to be many accidents, and sometimes the wheels were also getting damaged. And to get into the repairs, there are also the carpenters. The carpenters, the designated carpenters, who were the people responsible for building up such minuscule temples called the chariots or the rathas. They are also seated there. They are eagerly watching. They are keeping a watch because each chariot is designated with the number of wheels. Now 16 wheels are there in Nandighosha and 14 wheels are there in Taladhwaja and 12 wheels are there in Darpadalana or Devadala. So are the gong beaters also. So one has to be very careful because many carpenters are there. They keep a watch because everybody, the security people, the navigators, the cheerleaders, the devotees, and all people also, even the people those who are holding onto the cordon, and also the ritualists who are standing on the deck of the chariot, they are not going to leave anything to the chance so that it may cause damage, so that everybody is taking lots of care to see that the passage becomes smooth to the garden house, the sprinkling of cool water goes on, and that is the spirit of the Yatra here, mesmerizing effect of the devotees and the presence of Lord Jagannath Rath and Goddess Subhadra on the Grand Avenue. And to continue further, it's time to commentating in Hindi. जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। माँ सुभद्रा का रथ, दर्प दलन, देवी दलन,
आगे बढ़ने की तैयारी। इस अद्भुत अपूर्व रथ यात्रा का आनंद पूरी जन्मभूमि पहुंचकर अति